income tax consideration in the arguments of relevance and irrelevance of capital structure. This is module number 215 of financial management. In the last few modules, we have talked about the capital structure theories, and we have seen the relevance and irrelevance, and also a long set of assumptions which are there when one theory or the other theory is presented. One of the very basic assumption was that we live in a world where there are no taxes. And that was an unrealistic assumption because we actually live in a world where there are taxes. Taxes दो तरह के हैं जिनको हमें समझने की ज़रूरत है. एक वो टैक्सेस हैं जिनको हम आज की दुनिया में इनडायरेक्ट टैक्सेस का नाम देते हैं, यानी वो टैक्सेस जो एक्सपेंस के ऊपर लगाए जाते हैं. अगर मैं कोई चीज़ ख़रीदता हूँ, कोई एक्सपेंस करता हूँ, तो मुझे उस पर कुछ टैक्स पे करना पड़ता है. ये जो टैक्स है इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जैसे कि सेल्स टैक्स या एक्साइज ड्यूटी वगैरह. दूसरा टैक्स वो है जो मैं अपनी प्रॉफिट या अपनी अर्निंग्स के ऊपर पे करता हूँ, एंड दिस इज़ प्रोपोर्शनल टू माई अर्निंग्स, यानी जैसे मेरी अर्निंग बढ़ती चली जाएगी मेरा टैक्स भी बढ़ता चला जाएगा. So when we talk about the implication of taxes on the theories, we are actually referring to the direct tax, that is income tax. So the tax that is charged on the income is the issue of discussion here. The second point is that income tax is applied in two different ways. Like for individuals, the tax rates and the tax application is quite different as compared to the corporate taxes. The companies, the businesses pay taxes at a different rate and in a different manner. So if we say that there are taxes, then these taxes will not be the same for individual and for the company. So if somebody is trying to get into arbitrage and buying and selling from one point to the other, the tax consideration will affect that decision and the theory will not hold good. So दूसरी बात जो हम ये कहते हैं कि कॉरपोरेट और इंडिविजुअल टैक्सेस के रेट्स और उनकी एप्लीकेशन की वजह से भी हमारी ये थ्योरी वैलिड नहीं है. Another very important concept is that of tax shield. टैक्स शील्ड के कॉन्सेप्ट को हम इस तरह समझ सकते हैं कि जब किसी फर्म के अंदर डेट इंट्रोड्यूस होता है या डेट का कंपोनेंट ज़्यादा होता है, तो उस डेट के ऊपर वो कंपनी ज़्यादा इंटरेस्ट पे करती है. एंड इंटरेस्ट इज़ एन एडमिसिबल एक्सपेंस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टैक्स. यानी अगर कंपनी ए 100 रुपीज़ इंटरेस्ट पे कर रही है और कंपनी बी 200 रुपीज़ इंटरेस्ट पे कर रही है, तो कंपनी बी को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करने की वजह से कम टैक्स पे करना पड़ेगा एज कंपेयर टू द कंपनी ए. So this is what is called the concept of tax shield, meaning that if the leverage is increasing, if the amount of debt is increasing, that means that more interest will be paid and incurred, and as a result, the amount of profit will be reduced, and hence the amount of tax will be reduced. So if a firm has a higher leverage, उसके पास ज़्यादा debt है, तो उसका इंटरेस्ट भी ज़्यादा होगा, और उसका इंटरेस्ट ज़्यादा होने की वजह से उसका प्रॉफिट कम होगा, जिसकी वजह से उसका टैक्स की अमाउंट कम हो जाएगी, और दूसरी कंपनी उसके साथ उस अमाउंट ऑफ रिटर्न को मैच नहीं करेगी, जो कि इस M&M आर्ग्यूमेंट की बेसिक बात है कि आर्बिट्राज के बाद भी दोनों फर्म्स का रिटर्न इन्वेस्टर के लिए सेम आता है. सो द रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर in arbitrage shifting from one to the other company, if there is income tax because of the tax shield, will not be the same. Another important element with reference to income tax and the tax shield that is created, that this tax shield is also uncertain.
uncertain from the viewpoint that tax rates are not fixed forever. यानी किस फर्म के ऊपर कितना टैक्स एप्लीकेबल है, किस इंडिविजुअल पे कितना टैक्स एप्लीकेबल है, ये गुजरते हुए वक्त के साथ तब्दील होता रहता है. So how can we be so sure that when we are getting into a process the tax shield will remain the same? It may change. So we may conclude our discussion by saying that once a company is exposed to the taxation, which is corporate tax, and the individuals are exposed to individual taxation, and these tax rates are fluctuating, the tax shields are different, and there is an uncertainty of tax shield also, M&M theory does not hold good. So again, this assumption is very important to prove the process of arbitrage, and in an income tax world, M&M theory does not hold good.